हाय गाइस, वेलकम टू ए न्यू एपिसोड। आज मेरे साथ है समीक्षा एंड समीक्षा इज ए साइकोलॉजिस्ट। दिस इज हर फर्स्ट टाइम कमिंग ऑन अ वीडियो पॉडकास्ट, आई बिलीव, है ना? Yes, agreed, यस। 100%. तो समीक्षा जी, आप बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं? प्लीज क्या करते डू कैसे योर करती है? ओन Okay, ऑनर्स। okay. So, I am a counseling psychologist. ओके। I've been working for last 2.5 years in the field. Other than that, obviously, I've interned in a lot of places. But basically, what I do is I take one-on-one therapy with clients. Therapy sessions mostly about whatever they're experiencing difficulties with. We talk about that. We try हम्म। to work together as a team and try to help them live a better life, I guess. ओके। तो मतलब लाइक विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन मेनी थिंग्स। पहले Yeah. एक मेरा जो डाउट है कि हाउ डू वी कॉल यू एज अ प्रोफेशनल? आर यू अ साइकेट्रिस्ट और यू अ साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट? क्या होता है? क्योंकि इतने सारे टर्म्स हैं। तो हाउ हु इज हु बेसिकली, हाउ डू वी एड्रेस एंड whom to go to for whatever the need is? Okay. Okay. So there are mainly three that you'll Okay. come across. There are plenty more that are Okay. part of, let's say, different spaces. One is a psychiatrist, one is a clinical psychologist, and one is a counseling psychologist. So a psychiatrist is Psychiatrist. somebody who basically they do MBBS and then they do MD in psychiatry. And what they basically, their main work is that they will give हम्म। you medicine. So let's say अच्छा। somebody who has a very high intensity of anxiety or हम्म। depression and they or let's say schizophrenia, anything like that, हम्म। that requires them to use pharmacotherapy, which is हम्म। medicines. So हम्म। you go to a psychiatrist, you tell them what you're experiencing. On the हम्म। basis of your symptoms, हम्म। they will diagnose you with a specific disorder or हम्म। situation, and they will give ओह। you medication for the same. ओके। So psychiatrist therapy नहीं देता, हम्म। psychiatrist सिर्फ medication देता है. So ओके। for a lot of people, medication might help in हम्म। terms of, let's say, अगर उनकी everyday activities या therapy work करने के लिए भी कभी कभी हम्म। medication जरूरी होती है. जैसे हम्म। somebody who's a panic disorder, let's say, हम्म। so they would need, let's say, an anti-anxiety or like an SOS medication so that they, हम्म। able to manage their symptoms sometimes before they're able to have different ways, let's say, different grounding ways to develop. हम्म। कि कभी कभी बेसलाइन एंजाइटी मैनेज करने के लिए यू नीड मेडिकेशन. ठीक है. ओके। सो दैट्स साइकियाट्रिस्ट. या. सो लाइक, सो दैट्स साइकियाट्रिस्ट. okay, 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 हाँ, please continue, या continue. यू सेइंग सॉरी. नो 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 आस्क. So like, you are not a psychiatrist, है ना? You take therapy sessions. नो. So यस. like, you would tell the person to कि you should consider a psychiatrist for the medication if you diagnose in your ओनली. sessions, है ना? हाँ, बट ओनली इफ आई फील दैट्स नेसेसरी. Yeah. In a lot of spaces, see, medication has its own side effects and everything as well, and obviously हम्म। dependency. तो उनको उसको wear off करना भी बहुत difficult होता है. जैसे हम्म। कोई भी एडिक्शन वर्क करती है, जैसे कॉफी हम्म। होता है या एनी हम्म। सॉर्ट ऑफ अल्कोहल और एनीथिंग, एनी सब्सटेंस, तो वैसे हाँ। मेडिकेशन की भी डिपेंडेंस क्रिएट होती है. तो आई ठीक वुड है। ओनली रेकमेंड if I feel If like their you feel like baseline it's anxiety, if I feel like therapy yeah. will only work when they are on medication, or they would need some sort of backup, like an हम्म। SOS medication. कि अगर कुछ बहुत necessity है तो उनके पास एक फॉर्म है उस तक हेल्प करने के लिए, हम्म। वैसा. So that's Okay. psychiatrist. Okay. Then clinical psychologist. So difference between clinical and counseling psychologist. One is a little हम्म। educational as well. So Okay. both of them do bachelor's and master's in psychology. हाँ. But the a clinical psychologist also does an MPhil. So there are two types of Okay. MPhil. I know कि अभी हाँ हाँ एक academic MPhil है जो हाँ discontinue हुई है. But हाँ जो clinical वाली MPhil है, that's more like जैसे MD होती है residency वैसा. हाँ. So 2 years you work in a hospital. Okay. You take all of those clients that come to you under supervision. हम्म. And 2 years, mostly it's like 40% पढ़ाई and 60% you take clients. Like you take Okay. clients जो भी वहां पे हॉस्पिटल में आ रहे हैं वो सारे आपके clients हैं. तो मतलब वो it gives you थ्योरी more. और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस का मिक्सचर है? हाँ, kind of. So it's ठीक है. mostly practice and very less theory. मतलब exams भी अच्छा होते हैं, अच्छा अच्छा but अच्छा. it's mostly practical. Like you get to work in real life setups and all of the basically लोग जो हॉस्पिटल आते हैं patients वो हम्म. सब आपके clients हैं. तो हम्म. यू वर्क अंडर समबडी एंड यू गिव देम थेरेपी. तो वहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर ज्यादा है. तो हम्म. इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेनली डील विद ओ. पीपल हु हैव हाई इंटेंसिटी ऑफ हम्म. disorders.
लेट्स ओके। से अगर डिप्रेशन एंजाइटी बहुत हाई है, मिड मॉडरेट सबका लेवल होता है, तो अगर बहुत हाँ, एक्सेसिवली हाई है, तो स्किज़ोफ्रेनिया या ऐसा कुछ है जो एवरीडे बहुत लाइफ में कॉम्प्लेक्स। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ नहीं, मतलब एवरीडे लाइफ भी नहीं कहूंगी, एवरीडे लाइफ के लिए तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी करता है, वर्क कर अच्छा अच्छा। जाएगा, बट ठीक है। समबडी हु हैज अ वेरी स्पेसिफिक डिसऑर्डर, ओके। लेट्स से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, जिसकी भी इंटेंसिटी हाई हो, हम्म। वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेटर हेल्प कर पाएगा, बिकॉज दे हैव एन ओह। एक्सपोजर टू वर्किंग हम्म। विद ऑल ऑफ दोज क्लाइंट। हम्म। ठीक है, so that's clinical, and counseling is somebody you come to for everyday life ओके। issues, let's say relationship ओके। adjustment, even depression, anxiety, but on a more milder हाँ, level, let's say जैसे something that you मैं आया हूँ अभी। जैसे आप आए हैं वैसे, मतलब somebody who has the insight for things and know कि can work, तो उसके लिए counseling psychologist better work करता है. So I am a counseling psychologist. I ओके। basically I did my bachelor's and master's in psychology, and I take clients on a one-on-one therapy basis. ओके, तो आपने कहाँ से पढ़ाई करी? I did my bachelor's from Kamla Nehru, DU, ओह। and my master's from Jamia. ओह। ओके, तो ये कोविड से पहले यू वर स्टडिंग एंड नाउ सिंस पास्ट 2 years यू आर Yes, प्रैक्टिसिंग, है ना? yes, 2.5 years, yeah. ओके। ऑसम, थैंक यू फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। अब पॉडकास्ट खत्म कर सकते हैं। Okay, नहीं नहीं, और मैं पूछता कॉम्प्लेक्स हो हूँ। गया, हाँ. और मैं हाँ जी. पूछता हूँ। सो या मेरे को बहुत ज्यादा मतलब ये कंफ्यूजन थी, चलो वैसे इंटरनेट पे तो हम्म. पढ़ सकते हैं हम, पर जो एक्सपर्ट हम्म. है उससे आप क्लियर कर लो तो एकदम ही क्लियर हो जाता है ना? इंटरनेट पे तो बहुत कुछ लिखते हैं लोग. हाँ, और वो कितना कुछ जो लिखा होता है वो जरूरी नहीं है सही है वो इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली. तो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है, इट्स बेटर टू आस्क देम, आई बिलीव। अब नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि एज यू आर डूइंग योर सेशंस एंड एवरीथिंग, तो इसमें या. जो लोग आते हैं तो दे कम फॉर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, है ना? या. तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ, कैन यू लाइक डिफाइन दैट? Yeah, sure. I mean, how do I define it? Okay, so mental health is an amalgamation of all of the factors that are part of your life. So, ओके। mental health basically means कि आप कितना, अपने emotions, thoughts, अपने environment को manage कर पा रहे हो, adjust कर पा रहे हो. Also कि आप everyday life में कैसे affected होते हो चीजों से. हम्म। तो तो लाइक जैसे मेंटल physical health है, हेल्थ में physical. इमोशंस भी आ गए? हाँ, mental health में ओके, emotions भी नॉट आ जस्ट गए. थॉट्स, लाइक इमोशंस आर आल्सो Not देयर? just thoughts, everything. ओके। Emotions, thoughts, the environment that you're part of, how you're affected by the environment that you're part of, how you're ओके। managing your everyday activities, all of it. ओके। Because let's say आपकी mental health best नहीं जा रही है अभी, हम्म। तो आपके सारे एरियाज में उतना ही इम्पैक्ट हाँ, पड़ेगा. ट्रू 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 ट्रू। राइट. तो फिजिकल हेल्थ में क्या होता है, अगर कुछ इशू है, लग गई, चोट लग गई, या यू आर हाँ सिक, यू इट्स वेरी, हाँ कैन गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट फिक्स्ड. हाँ। Right. But mental health, a lot of times we don't realize until unless it becomes such a bigger problem ओके। that you feel like, oh, now I'm not able to deal. What do I do with it? हम्म। So, एंड which is why इट्स mental health is नॉट important. विजिबल आल्सो, इट्स इन योर हेड। Yeah, yeah, definitely not visible. A lot of times you will see somebody who's, very happy go lucky, like, iski life mein kya problem ho sakta hai? हाँ। And they might be experiencing some form of anxiety or some form of, difficulty with हम्म। overwhelmingness or something as basic as, let's say, interpersonal difficulties. हाँ। So all of that together makes a person's mental health, sane. ओके। Let's say, not even like sane and sane, so हाँ chalo, it's a very different हाँ concept, हाँ हाँ हाँ। but something that बट makes it दैट more व्हाट regulated. मेक्स अप मेंटल हेल्थ, Exactly. ऑल ऑफ All of the दिस? amalgamation of ओके। everything that's part of your life. ओके, मतलब जैसे मैं सोचता था या समझता था कि मेंटल हेल्थ मतलब सिर्फ माइंड से ही रिलेटेड, कि आपके माइंड या थॉट्स में समथिंग एंड यू Huh, गो टू समवन हु इज एन एक्सपर्ट हु विल हेल्प यू विद इट, बट लाइक यू आर सेइंग agreed. इट हैज मोर थिंग, सारी चीजें Yeah, so mind and अकाउंट होती thought हैं। is one thing, right? हाँ। Mind and thought is one thing, but all of the things that are part of your life also impact हम्म। your mental health in many ways. So mainly it's mind, thought, emotion. Your ओके। behavior, your thoughts, your emotions, your let's say like how your perspectives, हाँ all of that. हाँ But जो भी आपके आसपास की चीजें हैं आपके लाइफ में, वो भी वो उन चीजों को इम्पैक्ट करती है in one way or another if you don't realize it. हाँ हाँ Let's say हाँ hypothetically you're dating somebody and आज घर में हाँ आज गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, हाँ तो आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ सही रहेगी? हाँ, मतलब फिर वो दिमाग में चलते रहेगा ना कि लड़ाई हो गई, या एग्जैक्टली. मतलब बात नहीं बन रही, तो फिर दूसरी चीज पर ध्यान नहीं जाएगा, एंड देन समवन एग्जैक्टली. इज देयर इन द इन्वायरमेंट, उसको भी फर्क पड़ेगा।
एग्जैक्टली। ओके, कूल। तो अब नेक्स्ट, ठीक है, अब पहले तो मुझे लगा मेंटल हेल्थ यानी सिर्फ माइंड से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड, बट यू आर सेइंग इमोशन इज आल्सो देयर। मेनली, हाँ। या तो इमोशंस इज आल्सो सो देन देयर इज इमोशनल हेल्थ आल्सो। तो देयर। हाउ डू यू नो वुड वांट टू टॉक ऑन इट, क्योंकि इज दैट योर डोमेन ओके, आल्सो? आई वुड बिलीव वो तो या ऑब्वियसली हो ही जाएगा। let's say imagine mental health is like a big umbrella, and ठीक है। emotional health, thoughts, behaviors, everything हम्म। comes under it. ओके। So emotional health is basically like, if I put it in a layman term, how aware you are about your emotions, ओके, how you're able to regulate them. लाइक हाउ Let's मच say यू आर अगर आपको फीलिंग angry, and how less you are feeling in something or something not like that. not less, okay, Okay. let's say अगर आप आज एंग्री हो, तो आपको हाँ। पता है कि आप क्यों एंग्री, सो सेल्फ अवेयरनेस ओके, इन सेल्फ टर्म्स ऑफ दैट, लेट्स से अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस कि मुझे पता है कि मुझे इस चीज की वजह से गुस्सा आया, हम्म। ठीक है। और लेट्स से अगर गुस्सा आया तो हाउ आर यू एबल टू रेगुलेट इट, और हाउ यू आर ओके। लेटिंग योर सेल्फ फील इट। A lot of हम्म। times people have such associations with negative emotions that, oh, if I, let's say मुझे anger आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या I'm feeling upset, I would rather avoid it, like push away कि नहीं, I'm हम्म। not allowed to feel angry, or हम्म। let's say react in क्योंकि anger or वो एक upset. बिलीफ है माइंड में, Exactly. बट नेचुरली But कुछ, all of those parts, नेचुरली कुछ और हो रहा है उस मोमेंट में। एग्जैक्टली, और कितना हाँ। कंफ्लिक्टिंग हो जाएगा वो हाँ। चीज कि अगर मैं गुस्से में हूँ, बट आई एम लाइक यू सो नाइस. But and then it shows on your body language because like. Exactly. And see, a lot of times people confuse that like not confused, but like they feel like not clear about the idea that, oh, कोई भी हम्म, negative emotion feel करना खराब बात है. भाई But बहुत अच्छी बात है। it's not a bad thing. हाँ। Exactly. It's normal human for you to या। feel angry, sad, upset, frustrated, all of those emotions, right? Because that's what is part of your emotional realm. ट्रू, ट्रू। Just say, That have you what seen makes you Inside Out? human and who you are basically. हम्म। एग्जैक्टली exactly. तो अब इमेजिन करो कि आपको गुस्सा आ रहा है, बट आप अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे हो गुस्सा फील करने के हम्म। लिए, तो ऑब्वियसली इट विल इसके पेंट लिए अप एक टू अ एक पॉइंट टर्म वेयर है, व्हेन यू डोंट. कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि सोच कुछ रहे हो और फील कुछ कर रहे हो और बीच में अटक एग्जैक्टली, गई। एक्ट कुछ और ही कर रहे हो. हाँ। हाँ, तो सोच कुछ रहे हो, फील कुछ और कर रहे हो, और एक्ट कुछ और कर रहे हो. हम्म। डिसोनेंस कैन ऑल्सो लीड टू, लाइक ऑब्वियसली, लाइक वो क्या होगा, वो अभी नहीं निकलेगा, वो पेंट अप होता रहेगा टू अ पॉइंट वेयर व्हेन यू ओ। डोंट वांट इट टू कम आउट, and when it will not be हाँ। convenient for you to come out, that's हाँ। when it'll come out. I use this metaphor to explain people, like, not pushing away हम्म। or repressing their emotions is, have you हम्म। ever played that arcade game where you look, hit the frogs with या hammer या and या it pops up in different या places, right? या So या या emotions are like that. you हाँ। you hit it with a कहीं hammer जा once, you नहीं रहे push it वो, down once, it'll, वो बस वो exactly, it'll pop up one way or another स्टोर हो in रहे some हैं, form. स्टोर हो रहे हैं। तो जो जितने प्रेशर से Exactly, तो स्टोर है कहीं ना फिर कहीं निकलेगा. एक टाइम के बाद वो नेचुरली अपने आप ही निकल जाएगा। एग्जैक्टली, तो यहाँ पुश कर दिया, बट कहीं तो निकलेगा. ये एक चीज है जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई बीइंग एन आर्टिस्ट, या तो मेरा तो काम अपने इमोशन से मतलब बार बार रूबरू होना एग्जैक्टली. चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। तो हाँ ओवर द जी. इयर्स व्हाट आई हैव सीन कि बिकॉज आई चोज माई प्रोफेशन एज एन आर्टिस्ट, तो उसमें हम्म. आई एम वेरी सेल्फ अवेयर ऑफ अबाउट हाउ आई एम फीलिंग, अब इस फीलिंग को कैसे यूज करना या. है, या अगर किसी से हम्म. बात कर रहा हूँ तो कितना मैं बात कर सकता हूँ, अगर मैं मतलब मेरा सिस्टम सही नहीं है, इमोशनली मैं बहुत या. ज्यादा ओवरवेल्ड हूँ, तो आई शुड प्रेफर कि मैं सामने वाले को एड्रेस कर दूं कि देखो मैं अभी ठीक नहीं हूँ, आई बेटर टॉक व्हेन आई एग्जैक्टली. आई फील बेटर और इन हार्मनी विद इन मेक मी। सेंस. या. है दैट्स ना? वेरी दैट्स वेरी हेल्दी ऑफ यू. या. या, थैंक यू, चलो ठीक कर रहे हैं। तो लाइक एग्जैक्टली, सो दैट्स फॉर व्हाट, मी, दैट्स व्हाई इमोशंस आर इम्पोर्टेंट. हाँ, तो या. नेचुरली लाइक लाइक फ्रॉम माय प्रोफेशन तो इमोशनल क्या कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन काफी होते ही रहता है, होते ही रहता है, होते ही रहता है। फिर या. उसके बाद मैं जैसे मतलब वेरी अर्ली ऑन इन माय लाइफ आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन एंड ऑल। तो उससे कि हम्म. कैसे आप अपने इमोशंस और थॉट्स को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से न्यूट्रली देख सकते हो विदाउट एनी एग्जैक्टली. जजमेंट। तो उससे जो या. मैंने एक्सपीरियंस किया कि अ, जैसे बॉडी और माइंड हो गया मेरा, वो फिर कूल एंड काम ही हम्म. रहता है, मैं आइडेंटिफाइड ही नहीं हूँ जबरदस्ती में। और उससे एग्जैक्टली. फिर ये हो जाता है कि ये तो नॉर्मल ही है, मतलब कोई चीज हो रही है
तो इट्स नॉर्मल, इट Hmm. इज माई चॉइस देन टू रिएक्ट ऑन इट और रिस्पॉन्ड ऑन इट बेसिकली। तो रिएक्शन तो क्या हो Hmm. जाएगा, मैंने वो इमोशन या उस थॉट में गिव इन कर दिया, ठीक है। और Exactly. फिर रिस्पॉन्स हो जाएगी कि मैंने बहुत उसको ढंग से देखा, समझा, फिर मैंने बात करी, और क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उस समय जितनी जरूरत है उतनी बात होगी, राइट। Makes sense. And that's true. That's the whole point of it, right? Like why I said ki it's important to understand where it's coming from or acknowledge your emotion हम्म। and then decide how you want to deal with ऑलराइट। it. Right? Because a lot of times when एक्नॉलेजिंग we don't इमोशंस। acknowledge, ओके। exactly, acknowledging emotions, when we don't realize where it's coming from, we tend to react more than respond. And या then it would not be convenient for us या to react in those moments. like it has consequences which are not suitable for you if you if Exactly. someone reacts in a bad Especially way। if it involves somebody else. या अच्छा, तो मैं तो देखो ये नेचुरली कर रहा था, जितनी मेरी समझ थी Good. कि मुझे सही रहना है, फिर ढंग से परफॉर्म Hmm. करना है, ढंग से रहना है, तो हाँ जी. like I've been doing this. So इसमें I would want to ask, what when people come to you, what usually Hmm. do they have as a problem, or how they are able to deal or not deal with things? मतलब कोई जनरल पैटर्न Okay. यू वुड हैव सीन, यूजुअली सबके साथ ऐसे होता है, या यू नो। Yeah. Okay. So I think general patterns that I've seen is sense of self. Like they're not aware, ओ, या फिर बहुत sense of self बहुत positive नहीं है. सेंस ऑफ Usually it's सेल्फ। like, oh, I'm not good enough. Yeah, I'm not good enough. हाँ, I'm not doing something well. I सेंस ऑफ feel like सेल्फ that's the कितना base. हेल्दी And है किसी का, अपने आप को कोई कैसे देखता है। exactly, हम्म। exactly. Self view ही अच्छा नहीं होगा तो फिर हम हाँ। किसी चीज के लिए भी settle कर जाएंगे हाँ। logically, हम्म। right? मतलब खुद, So let's say in खुद this के साथ ही situation, yeah, रिलेशन सही नहीं है इंसान का, तो exactly. वो तो वही। किसी और के साथ कैसे होगा? हाँ। Yeah, in this situation, what's something that I have, like, it's a very big, like, very normal pattern I've come across. I've even told that to my clients that I've come across is that हम्म। growing up, especially India, mein, like, I don't हम्म। know about other species, obviously, but हम्म। growing up in India, obviously, career, academics, all of this is given so much importance, हम्म। ट्रू। right? And especially as a child, we learn most of the things about us, about our environment, how we're supposed to form attachments from our home environment only, like our हम्म। immediate environment, right? हम्म। वही So हमारी it's given ट्रेनिंग a और career. प्रोग्रामिंग हो गई बचपन से बड़े होते तक। Exactly, exactly. हाँ। That's the only book that we have. We know, like, that's the हम्म। only source of information that we have, या right? And ग्रोइंग अप। academics and career is given so much importance हाँ। कि बच्चा वही सीखता है कि अगर मेरी academic या career सही नहीं जा रहा है हाँ। तो मैं good enough नहीं. हाँ, तो वो Simple. सेल्फ इमेज पे आ गया कि मैं सही नहीं हूँ फिर। Exactly. Sense of self. हाँ, exact. Sense of self हाँ। is attached to only academics or career. ओके। कि career academic खराब हो गया तो मैं भी हाँ। खराब हूँ because nothing else makes me me but this हाँ। thing. Like I usually use this metaphor with my clients a lot is Jenga. Like if you've ever हाँ। played Jenga, then you हाँ। know हाँ। how हाँ। you putting the right blocks, the Jenga keeps हाँ। forming bigger and bigger. But the moment you pull the wrong block, the whole Jenga falls. हाँ। ट्रू। या। So it's like when you're pulling the wrong block, it's हम्म। almost equivalent to like you making a mistake, and which हम्म। is human. Let's या। say आज अगर ढंग से पढ़ाई नहीं हुई या कुछ गड़बड़ हो गई काम पे, वो या। तो बहुत नॉर्मल चीज है. हाँ। पर जिसका जिसका सेंस ऑफ सेल्फ उस चीज पे इतना हाईली डिपेंडेंट है कि मैं गड़बड़ कर ही नहीं सकता, आई हैव टू बी हम्म। परफेक्ट, आई एम नॉट हम्म। अलाउड टू मेक मिस्टेक्स. हम्म। The automatic first line of thought would be, oh, I'm not good enough, I'm not smart enough, हम्म। I always do this, why am I doing this? तो वो सेल्फ So क्रिटिकल, मतलब और उसकी इंटेंसिटी बढ़ते जा exactly. रही है इंसान की। Exactly. And they keep on only identifying or like partially biased towards those events only. कि जहां ओके। मैंने गड़बड़ करी है वो इजी है याद रखना इस एज कम्पेयर टू जहां मैंने अच्छा करा है. क्योंकि अरे ओ। अच्छा किया तो वो कोई बड़ी बात हाँ। तो है नहीं. हाँ, दोनों ही चीजें हो रही है ना, बट लाइक ध्यान किस पे ज्यादा बंदा दे रहा है कि मैंने गलत किया, एग्जैक्टली. फिर सेल्फ पिटी पे जा रहा है। एग्जैक्टली. ओके। एग्जैक्टली. जैसे जैसे लेट्स से इफ आई आस्क एनीबडी, लाइक आई एम हम्म। श्योर इफ आई आस्क यू एज वेल, हम्म। कि मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको पता है आपकी वीकनेसेस क्या है, उसमें दो हम्म। मिनट लगेंगे बताने में कि अच्छा हम्म। मेरा ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये हम्म। खराब है, ठीक हम्म। है. पर अगर मैं हम्म। आपसे पूछूं आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है या व्हाट आर द हम्म। पॉजिटिव क्वालिटीज दैट यू हैव, हम्म। that might take much more time or हम्म। confusion as compared to the negative qualities, हम्म। right? क्योंकि But अगर आपका पर्सपेक्टिव ही वैसा है. हाँ जी. ओके, क्योंकि शायद जनरली हमको बोला ही नहीं गया कि उस पर भी ध्यान देना है ना। एग्जैक्टली. हमारी प्रोग्रामिंग में वो है ही एग्जैक्टली. नहीं।
हाँ जी, हमें गलतियां ज्यादा बताई गई है कि अच्छा ये अच्छे से नहीं किया, हाँ ये फिक्स कर लो। हाँ। पर ये कभी अच्छा किया हो तो बहुत रेयर होगा कि हमें पैट ऑन द बैक दिया हो कि ओ यू डिड दिस नाइस। या हाँ, मेरे केस में तो बहुत So there has been कम no कम ही रहा है। reinforcement. मैं खुद ही पैट ऑन दी बैक Same, कर रहा था। same. Now though हाँ, I don't need that validation from my या parents. I'm like I know what I did good. या जैसे मैं थ्री इडियट्स देखी But थी, then तो उसमें लाइक आमिर खान था ना, तो लाइक ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, डू द गुड। तो मैंने वहां से सीखा कि चलो कोई और नहीं दे रहा, बट मुझे तो समझ में आ रहा है ना कि मैं जितनी भी समझ है उससे बेस्ट exactly, कर रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ। तो आई exactly, स्टार्टेड डूइंग दैट कि इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड, यू आर डूइंग गुड। exactly. Yeah, yeah. I to do that with my clients also in the session. Ki, oh, good job, pat on your back. Like I make sure that I acknowledge if they've done something good and I tell them that I'm proud of them. Or I give them, दैट positive sense of अफेक्ट्स acknowledgement that they इन need to दिस realize that as well. सेल्फ इमेज, है ना? Yeah, 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 yeah. So then that in turn affects your self-image, your sense of self हाँ, and everything. So that's एक one अप्रूवल common मिल रहा thing. And है ना वहां पे? exactly. So you don't need validation from outside then. If you're already हम्म pouring हम्म yourself हम्म in, हम्म, or you're giving yourself internal validation, then the हम्म, need of seeking external validation would automatically reduce with time. हाँ हाँ, ट्रू ट्रू, आई कैन अग्री, Make दिस sense? इज हैपेंड विद मी। So that's one thing. या Yeah, so that's one thing. Another common thing is interpersonal relationships. So friendship, family, romantic partners, हाँ mostly miscommunication, yeah, boundaries nahi ho raha hai, या हाँ maybe they have different types of attachments, so that's difficult. Or हाँ, not being able to make friends. I think that's also something as an adult becomes a very difficult thing. Um, ये I think as an adult, friendships maintain करना और हम्म, बनाना सबसे हाँ, difficult काम है. मेंटेन करने में तो मेहनत लगती है काफी। एग्जैक्टली, पर वो तो किसी भी रिलेशनशिप में लगेगी ना. हाँ, पर लेकिन फिर मैं जैसे देखता हूँ कि वही तो फिर बात हुई ना कि आप एक्चुअल में रिलेशनशिप का एग्जैक्टली, मायने रख रहे हो, क्योंकि आपको मेंटेन करना है। तो ऐसे तो सारी एग्जैक्टली, चीजें कुछ ना कुछ होते ही रहता है, आती हैं और जाती हैं, तो इट्स योर चॉइस, दिस अग्रीड, मैटर्स टू मी सो मच, आई हैव टू कीप या वर्किंग ऑन इट। एग्जैक्टली. लाइक यू बेसिकली पुट इन द एफर्ट टू मेक देम realize how much value they hold for you. दे होल, या एग्जैक्टली। Yeah. So a lot of times that might be in words, a lot of times that हम्म might be in actions, but then your हम्म actions and words should also match. If I'm हम्म making you telling you that, oh, you're the most important person in my life, but I'm, हम्म, not talking to you for या months, या एंड लाइक then दिस नो। doesn't align. That will हाँ, lead to dissonance at the या end of the day. तो So ये then that, काफी हो रहा है, लाइक yeah, यूएसए। yeah, very common. हाँ, वो तो मेरे Very मेरे को common भी that, दिखता ही है। uh, वो तो उस वाला के लिए भी। exactly. So that happens in romantic relationships as well. A lot of times, हाँ, let's अभी say तो you're बहुत seeing ज्यादा somebody, ही, अभी तो बहुत ज्यादा ही सबके साथ हो रहा है, बहुत chase ज्यादा। games, या miscommunication, या not putting effort. They घोस्टिंग, don't realize. Yeah, ghosting. Oh my God, that's the worst मेरे kind. साथ तो Or बहुत कर leading देते हैं on. लोग। Leading on, I feel like it's just plainly like very mean, honestly. It's like almost you're ओके bullying somebody. ओके। Because let's say you're telling this हम्म, person that, oh, they're important, and you're constantly leading them on without telling बट them या what the end goal is of that situation. And then you're हाँ like, oh, but I don't see you that way. So when what were you doing all of this while if हाँ you don't see that person that way? हाँ, Just say there's this new Gen Z term that I've come across. It's called breadcrumbing. या आई ऑल्सो, मेरे को भी कभी पता Yeah, लगा so ये। it's like you're like giving small amount, like how तो कितना pigeons को या टॉक्सिक है फिर birds ये, को थोड़ा थोड़ा देख इसको ऐसे। pigeons को या birds को थोड़ा थोड़ा डाल दो ताकि हाँ they keep coming. Like हाँ, you're putting bare, not जाल even में bare, फंसा रहे मतलब हो किसी amount को। of effort. हाँ, Exactly, जी like you're जी। breadcrumbing them so that they are on the hook. हम्म But then you're just basically making them used to the fact that they should be constantly, craving for that breadcrumb. हम्म Okay, what next? When हम्म next? हम्म, And that's also very unhealthy. यार, So, बट ये and natural thing. ये एज अ समथिंग, एज अ समथिंग कूल इज गोइंग ऑन, राइट? ये जो चीज है। I don't know exactly or what makes it cool. They या only know. Like या whoever is doing it only डूइंग know इट। what makes this cool. Yeah, like I, या I personally, my opinion, I feel communicating हम्म, is cool. You या don't think this सेम person is सेम, doing for you? क्लियर Straightforwardly क्लियर just mention. कम्युनिकेशन कि मैं ऐसे सोच रहा Exactly, हूँ, फील कर रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है, और मुझे क्या करना है फिर। exactly, क्लियर हो exactly. जाएगा तो So let's फिर say even if,
मतलब रिलेशनशिप सही रहेगा, Yeah, या तो ये रहेगा कि चलो नहीं बन रही तो इट इज बेटर टू नॉट तो वो exactly. जगह खाली हो That जाएगी would be शायद। much better any day. हाँ, फिर हम मूव ऑन कर सकते हैं, किसी और के पास जा सकते हैं। बट ऐसे बीच में फंसे रहना Exactly. और क्लियर नहीं रहना तो लाइक फिर आपकी लाइफ भी तो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी ना, कि लाइफ भी आपकी फंसी हुई चल रही है Exactly. हर जगह। Exactly. Exactly. So you're just stuck in that space where you're not able to come out of it, but at the same time, you're not able to sustain there as well. ये बीच में फंसे हुए हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है। हाँ, एग्जैक्ट एम्बिग्विटी इतनी है, अब सोचो एंजाइटी नहीं हम्म। होगी तो क्या होगा। तो जनरली लाइक पीपल व्हेन दे कम टू यू, यही सब चल रहा है सबके साथ ऑलमोस्ट, घुमा फिरा हाँ, के। ये सब करियर, सेंस ऑफ सेल्फ, दिस, हम्म। let's say वही just like you said, like we're talking हम्म। about how you talk to yourself, so self हाँ। critical, हाँ। all of that. So in basic a lot of times anxiety is very common, so anxiety एंजाइटी। or like low mood and all of that is very common. हाँ। So anxiety is the most common thing. Obviously, I think everybody faces experiences in one form हम्म। or another. It's just हाँ। the intensity of it that depends on person to person. एंड So, हाउ वी but they कैन don't know how हैंडल to इट। manage that. हाँ, हाउ Yeah, टू मैनेज exactly. इट। People don't know how to handle it. Yeah, manage it. So that सो becomes फॉर difficult. दैट So दे that's कम टू something. यू और समवन लाइक यू। Yeah, इसमें एक मेरे को एक पॉइंट ऐड करना है कि अभी जैसे हाँ फेलियर के जी, बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। हाँ जी. तो मैं अभी कोई एक पॉडकास्ट ही देख रहा था, पता नहीं कुछ सुन रहा था। तो Hmm. उसमें दैट पर्सन वाज लाइक कि अच्छा हाँ, वो बादशाह का पॉडकास्ट था, ठीक है। तो उसमें अच्छा. हाँ, तो वो कह रहा था कि हम ना फेलियर्स को रिकग्नाइज नहीं करते बड़ा, और हम उसको Hmm. सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि फेलियर से ही हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। और फेलियर True. को एज अ बहुत ही शेम और गिल्ट के उसमें देखा जाता है कि फेल हो गया ये, तो भाई मार्क्स नहीं Exactly. आए, जैसे Hmm. यू वर टेलिंग करियर, तो Yeah. मार्क्स नहीं आए, फेल हो गया, वो बचपन से ही वो चल रहा है, तो सेल्फ पिटी बंदे की हो रही है, सेल्फ इमेज खराब हो रही है। पर लेकिन लाइक अगर हाँ. आप उसको लाइक जैसे मैं देखता हूँ कि उसको एज अ डेटा लो, दिस डिडंट वर्क एंड दिस मच वर्क, so you can work on the Exactly. part which didn't work, basically it's like न्यूट्रली देखो, Exactly. उस पर थोड़ा सा काम करो, क्या पता वो ठीक हो जाए, यूजुअली हो ही जाता है। और आप देखते हो कि Yes. अच्छा ये कुछ Agree. ऐसी चीज थी जो मेरे को नहीं पता थी, मैंने नॉलेज इकट्ठी करी, मैंने सीखी, Hmm. और आई एम अ न्यू वर्जन, आई एम अ बेटर वर्जन। Exactly. इफ Exactly. लाइक वी कैन सी फेलियर लाइक दैट, ही वाज टॉकिंग लाइक दैट, फिर वो कह रहा था कि ऐसे होना चाहिए कि यू शुड फेल फास्ट, यू नो अच्छा. जल्दी जल्दी फेल हो, जैसे कुछ नहीं आ रहा जल्दी जल्दी फेल हो, देन यू लर्न एंड एट अ पॉइंट आप फिर एक सही पॉइंट पे पहुंच जाओगे। See, I don't agree. I mean, I don't know how that jaldi या। jaldi fail aligns, like, because see, life is still a process. I mean, it's ओके। still like it's one journey. It's not like हम sprint नहीं कर रहे हैं. It's still like a very, very हाँ। nice slow walk or a marathon, hopefully. हाँ, Not a इट्स अ sprint at all. So स्लो जल्दी जल्दी प्रोसेस, fail ट्रू। करके, हाँ। हाँ, जल्दी जल्दी fail करके जल्दी जल्दी fix नहीं होने वाला है कुछ. हाँ। ठीक है, but I agree that you हाँ, should learn from your एक्नॉलेज। failures. Let's say if हाँ। something exactly if something didn't work out, there could be two reasons. One, maybe it wasn't something that aligned with you, ओके। or it was something that maybe didn't work out, and you can always reflect what part of it didn't work out for you. या लैक ऑफ नॉलेज इन जनरल वी कैन Yeah. से, कि पता नहीं था, उतना I'm, जितना पता था उतना ट्राई किया। हाँ, एग्जैक्टली, सो कुछ भी हो सकता है रीजन. लेट्स से हाँ। अगर मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी थी और वो प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं हुई जितना मैं चाहती थी हम्म। अच्छी हम्म। हो. हम्म। Then I sit with myself and understand, okay, what made it difficult? Let's say, or what हम्म। made it, what didn't, like, मैं क्यों 60% ही दिया और मैं कैसे 80% या 70% दे सकती हूँ नेक्स्ट टाइम. हम्म। राइट, द एग्जैक्टली। कंपटीशन इज नॉट कि मैं हर दिन, सी हर हर समय। दिन 100% would look different. हाँ। Exactly. हाँ, वो You can't पॉसिबल be भी नहीं होता। perfect. हाँ। एग्जैक्टली, और हर किसी का 100% डिफरेंट दिखता है, और हर हाँ। दिन का 100% डिफरेंट है. जरूरी नहीं है मेरा हाँ, आज का 100% कल के 100% से मैच हो. ट्रू। एंड दैट्स ट्रू, ऑल्सो ओके, क्योंकि एवरी as डे long as you're यू आर एट अ focusing. वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लेवल, आज कितनी एनर्जी है, एग्जैक्टली. फिर उसी हिसाब से बंदा उसको रेगुलेट एग्जैक्टली. करता है, फिर अब एक्शंस आज दो लेता है। घंटे सोए हैं. एग्जैक्टली, हाँ। आप 2 घंटे सोए हैं और हम हाँ। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 200% एनर्जी लेके चलेंगे, तो वो तो नहीं होने हाँ, वाला है. ट्रू। और मैं 2 घंटे से। एग्जैक्टली. हाँ। तो होल पॉइंट है कि हर दिन एनर्जी डिफरेंट लगती है एंड यू इसमें फिर कंपार्टमेंटलाइज अकॉर्डिंग टू दैट. सेल्फ अवेयरनेस वाली बात आ गई ना, कि आप कितना अवेयर हो खुद को लेके, कि चलो आज मैं इतना एग्जैक्टली. केपेबल हूँ चीजें करने के लिए, इतनी एनर्जी है हाँ. या इतना माइंडसेट हाँ. है,
तो फिर उतना ही बंदा Hmm. करेगा, जबरदस्ती पुश नहीं करेगा। आई एम राइट? Exactly. For example, let's say अगर मैं 2 घंटा ही सोई हूँ, but I have a हम्म schedule that I want to maintain. Let's say if I have a schedule that I want to wake up early and work out, but मैं सो हम्म। ही नहीं पाई time पे, हाँ तो हाँ। it wouldn't be fair that I'm waking up early and working out, हम्म pushing myself unnecessarily when it हम्म doesn't look like that it should be that हम्म way that हम्म day. हम्म। Right. Then you're basically, because there's this quote that I strongly feel about is हम्म। that if you don't take a break for your body will take a break for you, हाँ and it true। would not be at a convenient हाँ time. हाँ हाँ, ये तो। So you need to know what energy, what या situation, what emotions are working for you that day, and या accordingly decide how you'd want to utilize या that. ट्रू ट्रू ट्रू। So yeah, that's what I said. One of my Having friend, 100% different like time. she was just ignoring her health and everything from past, I don't know, Hmm. many years and everything. Now that Yeah. she has turned 30 and whatnot, तो उसके साथ और पाँव में ऐसे कुछ पेन होने लग गई थी। शी इवन इग्नोर्ड इट। Okay. तो अभी ऐसी प्रॉब्लम आ Yeah. गई कि बस लाइक शी इज नाउ एट बेड रेस्ट, कि आपने I'm अटेंड ही sure नहीं she has किया। like some spinal cord issue. Yeah. या ट्रू दैट, ट्रू ट्रू, स्पाइनल कॉर्ड I इशू have एंड। heard that. Like when you have foot हाँ hurting हाँ। foot, so that mostly is a और spinal cord issue. Yeah. उसमें कुछ ऐसे था कि लाइक शी टोल्ड मी कि वो जो चप्पल या जूते पहन रही थी, तो उससे बहुत एनर्जी पाँव में स्टक हो गई। जैसे ऑफिस जा रहे हो, कहीं Hmm. जा रहे हो, हील्स पहन के कुछ पहन के, उससे स्टक हो गई एंड Yeah. वो रिलीज ही नहीं हुई, एंड वो बहुत कम चलती थी क्योंकि बैठ के काम करना है। तो देन शी Exactly. इग्नोर्ड एंड नाउ इट एट्स अ पॉइंट कि लाइक यू सेड, लाइक बॉडी इज सेइंग नो आई वांट टू टेक रेस्ट, यू शट अप। Exactly. एक बार में That's ही what there's this line. No. 3-4 महीने अब पूरा रेस्ट पे बंदा है, और पर उस वजह से बहुत Exactली. सारी चीजें भी छूट भी रही हैं, काम छूट रहा है। Hmm. उसने बॉडी ने ही Exactly. अब See, that's बिठा why. दिया कि अब तुम सेल्फ रिफ्लेक्ट Yeah. करो, तुमने मेरे को अटेंड ही नहीं किया। Exactly. That's why, there's a very old saying that prevention is हम्म, better than cure. That हाँ applies to ट्रू every ट्रू। situation. Mental health, physical health. हाँ अगर आप पुश करे जा रहे हो और उसको इग्नोर कर रहे हो, वो कर। ऐसा नहीं कि वो रिजॉल्व हो रहा है, वो हम्म। स्टिल वही है. आप हाँ, बस डील वो कहीं करने नहीं गया कर नहीं, रहे हो, that's है also ना? okay. Exactly. वही Exactly. है। Today you are not able to deal with it, यू that's हैव okay. यू हैव But टू अटेंड you इट। can't just keep someday. You can't just keep pushing it, waiting for it to just evaporate हाँ। on its own. That's हम्म not going to happen. ट्रू। एंड लाइक अगर नहीं उस पे काम कर रहे, तो जितने जितने बड़े होते रहते हैं, जितनी एज होती रही, तो वो तब भी Hmm. और एक्यूमुलेट हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो Exactly. बेसिकली यू हैव टू रिजॉल्व इट एट सम पॉइंट, Yeah, ओनली देन इट विल गो एंड यू विल बी हेल्दी। exactly. Exactly. जैसे जनरेशनल ट्रॉमा वैसे वर्क करता हाँ है ना, रिजॉल्व नहीं, अगर उस लेवल पे भाई। रिजॉल्व हो गया होता तो आगे फॉरवर्ड नहीं होता. हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा ही जनरेशनल ट्रॉमा रिजॉल्व कर रहा हूँ अपने घर में। Good, you should. यू शुड तो नहीं, ठीक है, मतलब हाँ आई शुड, I बट mean, you इतना भी can do नहीं। better. You can do better than them. या Yeah. या